Hello students, this is Neeraj Verma and we are going to study today exercise 6.1 and rest of the numericals of this exercise. So our first numerical for this video is problem 7. तो इस न्यूमेरिकल में जो प्रॉब्लम 7 का ये है प्रॉब्लम 7 एक्सरसाइज 6.2 की, तो उसमें क्या है दिया गया है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू ड्रा अ ट्रायंगल। So draw a triangle. Let this is a triangle. This is a triangle. Triangle naming it A B C. This is a triangle. And what is given another thing? Another thing is it given that a line drawn through midpoint of one side of a triangle. Take one side of the triangle, let this is the side AB and line drawn through midpoint. So line its midpoint, let its midpoint is this, let it is D, and it is said that a line drawn through one side of a triangle parallel to another side. जिस साइड के पैरेलल हम यहाँ से क्या करते हैं लाइन ड्रा करते हैं और थ्रू मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट से ऐसे ड्रा करते हैं, तो ये कह रहा है कि इट बाइसेक्ट्स थर्ड साइड। तो टेक द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट द थर्ड साइड, दिस इज E. सो नाउ वी कैन राइट व्हाट इज गिवन that what is given in triangle ABC DE parallel to BC. It is said that it line drawn parallel to another side. This side के parallel ये line draw की गई है और उसके साथ साथ एक पॉइंट और दिया गया है कि this line drawn through the midpoint of one side. So this is the midpoint. So it is also given D is the midpoint of AB, that is AD equal DB. We can write here. It is given to prove. What is to be proved? To prove it is that this line bisects, means DE bisects the third side is AC. AC, that is AE equal EC. It is to be proved. So now moving to proof. Since in triangle ABC DE parallel to BC, it is given, we have written given, it is given, and if we recall theorem 6.1, then what is expressed in theorem 6.1? Theorem 6.1 says that if a line drawn parallel to one side of a triangle, then it divides other two sides in the same ratio. This is our theorem 6.1.
Since DE parallel to BC means one line is parallel to one side of the triangle. Line drawn, this line is drawn, then this line is parallel to one side of the triangle. So this will divide another two sides. What are another two sides? Another two sides are AB and AC. So it will divide both the sides in same ratio. यही तो कहा गया है कि एक लाइन अगर एक जो हमने ड्रॉ की है लाइन वो क्या है, एक साइड के ट्रायंगल की वन साइड के पैरेलल है, तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब ये अदर टू साइड्स ए बी एंड ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। सो वी कैन राइट हियर ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई upon EC, and this result is found from theorem 6.1, according to theorem 6.1, and it is given that AD equal DB. So ratio of both these will be 1. So we can write here 1 equal AE upon EC. Right here, since AB equal DB. Now transfer it here, then what is we found? EC equal AE. Hence, therefore DE bisects AC, or we can write here hence proved. तो इस प्रकार हमारा ये 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्व होता है। नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आवर 8th न्यूमेरिकल of exercise 6.1 NCERT Maths class 10th is using theorem 6.2 prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. So for solving this problem we have to draw a triangle. So draw a triangle. Let this is a triangle ABC. This is a triangle ABC, and it is said that the line joining the midpoints of any two sides. Let the two sides AB and AC and their midpoints are B and E. And it is said the line joining the 2 points of any two sides. तो joining the midpoints of any two sides. तो midpoints है D and E, इनको हमने क्या करा दिया, ज्वाइन करा दिया of a triangle is parallel to third side. तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो लाइन हमने ड्रा की है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। सो given, first of all we write here given. What is given? In triangle ABC, D is the midpoint of AB, that is AD equal DB, and E is the midpoint of AC, that is AE equal EC. To prove, what is to be proved? To prove that this line drawn line is parallel to third side.
third side is BC. Now move to for proof. So what is given here? Or we can recall the theorem 6.2. In theorem 6.2 it is said that if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then that line is parallel to the third one. तो हमें यही ये देखना है कि पैरेलल अगर प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये रेशियो, इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम होना चाहिए। ये थ्योरम 6.2 में कहा गया है। तो देखते हैं कि गिवन क्या है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो सिंस AD इक्वल DB it is given, so we can write here AD upon DB equal 1. This is our first equation. Since next it is also given AE equal EC, it is also given, so transfer here it AE upon EC equal 1. This is our second equation, and we can write from equation first and second we get by Euclid's postulates. Euclid's postulates have stated that if two things are equal to the same thing, then those are also equal to each other. तो यहाँ पर देखेंगे कि ये AD अपॉन DB 1 के इक्वल है एंड AE अपॉन EC भी 1 के इक्वल है। तो दोनों चीजें एक ही के इक्वल है, सो ये आपस में भी इक्वल होंगी। ये यूक्लिड पोस्टुलेट में कहा गया था। तो वी कैन राइट हियर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। नाउ चेक दिस रिजल्ट फ्रॉम अवर फिगर कि AD upon DB, AD upon DB means ratio of the parts of this side, and AE upon EC, this is the ratio of the parts of this side, and those are equal. So it means line DE is dividing these two sides in the same ratio. So we can write here the statement, since DE divides AB and AC in the same ratio, so DE parallel to BC, hence प्रूव। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, एंड अवर न्यूमेरिकल इज सॉल्व्ड। सो नाउ मूव टू अनदर न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, अवर 9th प्रॉब्लम ऑफ 6.2 CBSE मैथ्स क्लास 10th। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको हम क्या है इसमें देखेंगे। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O, so that AO parallel to CO. So students, to solve this problem we will have to draw a trapezium. So draw a trapezium. First of all, drawing a trapezium, A B C D. So this is our trapezium, and given that
इन ट्रेपेजियम ABCD diagonals AC and BD intersect each other at point O. So draw the diagonals AC and BD. These are the points. They intersect each other at point O. To prove, what is to be proved? To prove AO upon BO is equal to CO upon DO. It is to be proved. So for proving this, we have to construct a line, because we have read here theorem 6.1 and theorem 6.2, and in both the theorems a parallel line is to be needed in a triangle for our result. So we can write here a construction, and we will construct drawing a line parallel to AB and passing through point O. तो हम यहां ड्रा कर लेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे which is parallel to AC and passing through, and line, name the line PQ. So we can write here, drawing a line PQ parallel to AB and passing through point O. So move to the proof. Now move for proof. To take the triangle, this triangle, take this triangle ADB. So we can write here, in triangle ADB, what is given? That PQ parallel to AB implies that we can write here PO parallel to AB. It is given, nahi, by construction, this result is found by construction. So it is parallel to this. So by theorem 6.1, if a line drawn parallel to one side of a triangle by intersects two sides or divides two sides in same ratio, तो क्या होगा? Since PO is parallel to AB, so it will divide these in the same ratio. तो क्या होगा? We can write here dP upon PA, dP upon PA equal to DO upon OB, DO upon OB. This is our first rule. Now, since in triangle, अब हम जो ट्रायंगल लेंगे तो उसमें एक साइड जो पहले ट्रायंगल लिया था उसके कॉमन होनी चाहिए और ये डायगोनल आना चाहिए। तो ये साइड तो कॉमन हो नहीं सकती है, तो
ये साइड कॉमन ले सकते हैं, तो ए डी और ये डायगोनल आना चाहिए, तो सी, तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंड वी कैन राइट हियर पी क्यू पैरेलल टू ए बी and AB is parallel to CD. Since in trapezium two sides are parallel, so AB is parallel to CD. We know that. Then we can write here PQ. PQ को we can write PQ as PO और PQ. तो PQ is parallel to DC or CD, anything we can write here. So from this we can recall the theorem 6.1. The same result will be occurred here. Theorem 6.1 says that if a line PQ is drawn parallel to side DC, and it will divide other two sides in the same ratio. तो same ratio में क्या आ जाएगा, AP upon PD equal to AO upon CO. We can write here H. And if we check here that here is DP upon PA and here is AP upon PD, तो ये PD DP जो है ये होना चाहिए था न्यूमरेटर में, एंड AP किस में होना चाहिए था, डिनोमिनेटर में. सो वी कैन रिवर्स दिस, मींस टेक रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज, देन वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट PD एज DP एंड AP एज PA इक्वल AO अपॉन ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा CO अपॉन AO. This is our second result, and after observing these two, means from equation first and second we get, और यहां से फिर से वही हमारा यूक्लिड का जो पोस्टुलेट है उसके थ्रू, इफ two things are equal to the same thing then both are equal to each other. तो यहाँ पर देखिए कि ये dp अपॉन p है, dp अपॉन p एक इक्वल ये भी है, dp अपॉन p एक इक्वल ये भी है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे. वो स्टेटमेंट हम लिख लेंगे, जगह ना होने के कारण उस स्टेटमेंट को हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं. तो लिखेंगे क्या, लिख देंगे कि CO अपॉन AO इक्वल DO अपॉन OB को भी हम BO लिख सकते हैं. You can write here is H. And now check what is to be proved. It is AO upon BO equal CO upon DO, means AO जो है वो BO के न्यूमरेटर में होना चाहिए. तो यहाँ पे देखेंगे AO तो डिनोमिनेटर में, BO भी डिनोमिनेटर में, तो इसको अगर यहाँ ट्रांसफर करें, इसको इधर ट्रांसफर कर लें तो ये इसके न्यूमरेटर में हो जाएगा. तो वी कैन राइट हियर एज AO अपॉन BO इक्वल DO इसके अपॉन में आ जाएगा, तो CO अपॉन DO, और यही हमको प्रूव करना था. तो वी कैन राइट हेंस प्रूव्ड. और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होता है. तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो स्टूडेंट्स, CBSE मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग आज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? द डायगोनल्स ऑफ आर क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO, so that ABCD is a trapezium. So to solve this problem we have to draw a
फिगर, तो हम उस फिगर को ड्रा करते हैं। तो फिगर क्या है, लेट दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, A B C D. This is a quadrilateral and it is given that its diagonals by intersect each other at point O. So its diagonals are these AC and BD. They intersect at this point. This point is said O. Then what is given? Given that in quadrilateral A B C D, AC and BD, AC and BD intersect each other at point O such that it is also given that AO upon BO equals CO upon DO. So to prove ABCD is a trapezium, it is to be proved. So in this question also we need a construction, to write here construction. So in construction we will draw a line, means drawing a line PO. So draw a line PO. Drawing a line PO parallel to CD. तो हमने ये लाइन ड्रा कर ली और ये क्या है, PO. This line is PO parallel to CD. So now move to the proof. In proof, first of all we will write the given statement. Given statement, this is relationship BAO upon BO equals CO upon DO. This relationship is given, but we check whether these are of the same parts of the same line. AO upon BO, AO upon BO. This is AO is the part of AC and BO is the part of BD. But for proving, we need the parts of same line in the ratio. So written in the ratio. So we will move these. Then move it BO here and CO here. So we will get AO upon CO equal to BO upon B. This is our first relation which is given. This relation is given. Now we have drawn this line parallel to CD. So take this triangle, means since in triangle ACD PO parallel to DC, PO parallel to DC, this line is drawn. Or since PO parallel to DC, so we can write here AP upon PD equal to AO upon OC. This is our second equation. From equation first,
पुटिंग AO upon OC और CO equal to BO upon DO in equation second. In equation second. So we will get AP upon PD equal BO upon DO. This result shows in this question AP upon PD equal DO upon BO. So this result shows that this line PO is dividing these two sides of the triangle APD ADB in the same ratio. So from theorem 6.2 we can write here that PO, thus PO parallel to AB. Now we can write, since PO parallel to DC and PO parallel to AB, so DC parallel to AB. Or since two sides of this quadrilateral are parallel to each other, then we can say that it is a trapezium. So we can write this statement here that since two sides of this quadrilateral are parallel, so this is a trapezium, hence proved. यही हमारा प्रूव करना था कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 6.2 का। फिर से मिलेंगे अब हम लोग अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।